children, how are you? I hope you all are doing well, and I hope you've started enjoying the different concepts of grammar. Are you writing them? Are you reading it well? Okay, are you reading the grammar concepts, rereading them? Do you remember the different exceptions and rules? Great. Now let's move on to our chapter about subject-verb agreement. Okay, so this chapter's name is subject-verb agreement. Now let's see what is this chapter about. Okay, so hello kids. So look at the picture and read the sentences. 1. The cuckoo sings sweetly. 2. The cuckoos sing sweetly. In sentence 1, the subject cuckoo is in singular number. एक ही bird है. Okay, and the verb sings is also in the singular. Remember, the verb that ends in s indicates that it is in singular number. So, जो भी verb s से end होता है वो होता है singular form में. So, in sentence 2, the subject cuckoos is in the plural number and consequently the verb sing is also in the plural number. Okay, so cuckoos is plural, sing is plural, sings is singular. Okay, thus it is clear that a verb will be in the same number as its subject. In other words, a plural subject takes a plural verb and a singular subject takes a singular verb. This means that the verb in a sentence must agree with its subject in number. Okay, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपका जो subject है, now for example in this we are talking about the cuckoo. Cuckoo is what? It is the subject. और उसका जो action है वो क्या है? Singing का action है. So sings. So when we are talking about cuckoo, one cuckoo, it becomes sings. And when we are talking about many cuckoos, sing. And you will see that they are in agreement with each other. Okay. Now read the following sentences. I write a letter. He writes a letter. So in both the above sentences, the subject I and he are in the singular number. But we have used the verb of plural number with I. It is to be remembered that I is a first person pronoun while he is a third person pronoun. Thus, it is seen that a verb changes according to the person of the subject. So, जो first person, second person या third person जो होते उसके हिसाब से okay, ये जो verb होते हैं वो change हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे I जो है first person है. I'm talking about myself. So, it is a first person. That is why it is a singular number और यहाँ पे भी हमने use किया है a singular word. Okay, right. वैसे ही आप अगर देखोगे तो he writes a letter. इसमें he जो है वो third person है. Okay, third person pronoun. इसके लिए क्योंकि वो क्या होता है फर्स्ट पर्सन में क्या होता है I, सेकेंड में क्या होता है you एंड थर्ड में क्या होता है he, she, it, we, they. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे he जो यूज हुआ है वो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन. तो इसकी वजह से आप देखोगे कि a verb changes according to the person of the subject. So we can say that a verb must agree with its subject in number and person. ठीक है, तो अब हम रूल्स देखते हैं. रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय और, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब. जब और वर्ड यूज होता है ओके, जहाँ पे दो से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ते हैं बाय यूजिंग और, ओके, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द फादर और हिज सन इज एट द गेट. ओके, तो यहाँ पे इज है, इज मतलब सिंगुलर. द सर्वेंट और द मेड इज हियर. ओके, सो नेक्स्ट वन, व्हेन टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय और. अब दो या दो से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस और वर्ड से जॉइन हो रहे हैं, द वर्ब विल अग्री विद द सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द फादर और हिज सन्स आर एट द गेट. तो आप देखोगे हालांकि फादर इज अ सिंगुलर वर्ड बट सन्स इज प्लूरल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द वर्ब जो पिकअप हो रहा है वो सन्स के साथ जुड़ गया है. ओके, सो इट विल ऑलवेज जॉइन. ओके, जहाँ पे और वर्ड आ रहा है तो उसके बाद वाला जो वर्ड आएगा
whether it is singular or plural, उसके हिसाब से आप verb use करोगे. The tourist or the guide goes first. ठीक है, तो it is used using the second word after or to form the verb. When the subject is made up of two or more nouns or pronouns joined by and, we use a plural verb. For example, Anuj and Bikram are friends. तो ये दो चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, हमें and word यूज़ हो रहा है. यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ये या वो, यहाँ पे and यूज़ हो रहा है. तो अनुज एंड विक्रम आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्लूरल यूज हो जाएगा. द फादर एंड द चिल्ड्रन आर इन द ड्राइंग रूम. सम स्टूडेंट्स एंड अ टीचर वर गोइंग फॉर एन एजुकेशनल टूर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इफ अ फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द verb agrees with the subject and not with the noun in the phrase. For example, सो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आपका जो फ्रेज है ओके वो जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ रहा है, तो वर्ब जो है वो अग्री करेगा सब्जेक्ट के साथ. ओके वो नाउन के साथ नहीं अग्री करेगा, फ्रेज में जो नाउन है उसके साथ नहीं, बट तो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है उसके साथ दैट वर्ब विल अग्री. ओके, फॉर एग्जाम्पल, हरीश अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट इन द शो. Okay, the captain as well as his teammates plays well. Sohail and not his friends is to be blamed. ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे यूज हो रहा है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है उसके साथ उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में वर्ब यूज हो जाएगा. क्लियर? ओके, सोहेल एंड नॉट हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सोहेल. किसको ब्लेम करना चाहिए? सोहेल को. ओके, इसके लिए इज टू ब्लेम. अ पुलिस ऑफिसर टुगेदर विद टू कॉन्स्टेबल्स हैज कम टू इन्वेस्टिगेट द केस. तो कौन आया है यहाँ पे? सब्जेक्ट कौन है? पुलिस कांस्टेबल. ओके, किसके साथ आया है? दो कांस्टेबल्स के साथ, बट हम हैज कम तो हम लोग इसके रेफरेंस में डालेंगे पुलिस ऑफिसर के. वर्ड्स लाइक ईच, either, neither, everyone, everybody, someone, somebody, anyone and anybody. ओके, ये जो वर्ड्स है ये क्या लेंगे? ये लेंगे सिंगुलर वर्ब को. सिंगुलर वर्ब क्या होता है? either इट्स लाइक हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे, एस जिसके बाद लगता है वो वर्ब्स हो गए, या फिर इज. ओके, दे आर ऑल सिंगुलर वर्ब्स. तो फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी लाइक्स पूनम. ओके, either of the sums is correct. Somebody is standing at the gate. Everyone is happy. Neither of the two candidates is suitable for the post. Okay, so clear? यहाँ पे neither use हुआ है, either use हुआ है, everyone use हुआ है, somebody use हुआ है, okay, everybody use हुआ है. तो उसके साथ क्या हुआ है? यहाँ पे हमने singular verb को apply कर दिया है. In sentences beginning with there is or there are, the subject follows the verb and agrees with it. For example, okay, जब हम बोलते हैं there are fishermen in the sea, तो are use हुआ है, are. Okay, there is a fisherman in the sea. जब हम एक particular fisherman की बात करते तो is हो गया, और जब हम fishermen की बात करते more than one तो are use हो गया. ठीक है? So collective nouns such as family, team, group, committee, if taken as a unit, are considered singular. मतलब अगर ये unit बन जाता है तो तो वो singular बन जाता है और फिर वो उठाएगा singular verb जैसे is या is. Okay. For example, the team practices every day. तो हम टीम की बात करें तो that team becomes one unit, singular. इसके लिए वो s यूज हो जाएगा after the action verb. Okay, जैसे practices becomes a singular verb. My family is in Paris. Okay, ठीक है? Clear? Now, but if collective nouns are taken to mean the number of individuals, they take a plural verb. Okay, for example, the police have got their arms.
तो यहाँ पे जो पुलिस जो है वो जनरल टर्म यूज हुआ है, जनरल नाउन यूज हुआ है यहाँ पे। तो अब जब हम उनके बारे में बात करें, ओके, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। द पुलिस हैव गॉट देयर आर्म्स, सो दे आर टेकन, द पुलिस इज टेकन एज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इसके लिए हैव गॉट, ओके, so they have taken a plural verb here, have got. The jury have different views on this issue. So jury is a group of individuals here. The number of individuals have different views on this issue. Okay. Now, what do you have to do? You have to become smart. So to be smart, what do? You solve the exercises, and they also help you in the adaptability skills, to adapt to the knowledge of what you are learning and to put them in your day-to-day life also. So, match the two columns to form correct sentences. अब ये दो columns को match करके आपको correct sentences बनाने हैं. Okay? जैसे astronauts travel in a spacecraft. Okay? The sheep in the field belong to the shepherd. Okay? These flowers are fragrant. Clear? अब बाकी sentences जल्दी जल्दी match करो. Next, B. Identify if the subject is singular or plural. Then fill in the correct verb to complete these sentences. These will enhance your reasoning skills. तो अभी identify करना है, ओके, ये सेंटेंस को पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है और सोच के लिखना है। इसमें आप सिंगुलर डालोगे, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, और करेक्ट वर्ब को डालोगे। द क्रू डैश प्रिपेयरिंग टू लैंड, द क्रू इज प्रिपेयरिंग टू लैंड। द कैप्टन एज वेल एज हिज क्रू मेंबर्स टेक गुड केयर ऑफ द गेस्ट्स। ओके, ईच ऑफ द बॉयज वर अवॉर्डेड अ प्राइज। तो नाउ जल्दी जल्दी ये बाकी जो सेंटेंसेस है काफ़ी इजी है, आपको सिर्फ हेल्प बॉक्स से पिकअप करना है। जल्दी जल्दी चैप्टर भी रीड करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग दीज एक्सरसाइजेस।